Hello everyone, I'm Dr. Sarfaraz Karim. Today we are going to understand the next module of digital marketing and AI. In this module, we are going to see that concept of AI and Chat GPT. आप लोगों ने जरूर सुना होगा AI का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी का नाम। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। Our module number 10 is all about these things, that chat GPT as well as concept of AI। इसमें हम क्या जानने की कोशिश करेंगे? इसमें हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि what is the meaning and concept of artificial intelligence। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, ये सब हम पहले में चर्चा करेंगे। दूसरा जो हमारा कंसेप्ट होगा आज का वो है व्हाट आर ओपन एआई एंड चैट जीपीटी। व्हाट एग्जैक्टली ओपन एआई इज, ओपन एआई क्या है, चैट जीपीटी क्या है, क्या दोनों सेम है या ओपन एआई कोई कंपनी है, चैट जीपीटी उसका कोई प्रोडक्ट है, ये हम सब चीजें देखेंगे। देन द थर्ड कंसेप्ट फॉर टुडे इज हाउ टू यूज द चैट जीपीटी। मेनी पीपल हैव द कंफ्यूजन, चैट जीपीटी को कैसे यूज करें, चैट जीपीटी का स्टार्ट कहाँ से करें, चैट जीपीटी को हम किस कहाँ से डाउनलोड करें, ये ऐप है, ये सॉफ्टवेयर है, ये क्या है। तो वी आर गोइंग टू सी दैट थिंग्स। देन वी विल मूव टू द कैपेबिलिटी एंड यूसेज ऑफ चैट जीपीटी। इसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या इसके यूसेज हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, बीइंग इंडिविजुअल कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे इसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। देन वी विल मूव टू द व्हाट चैट जीपीटी कैन नॉट डू। चैट जीपीटी की लिमिटेशन क्या है, चैट जीपीटी का फ्यूचर क्या है, चैट जीपीटी में अभी कौन सी ऐसी चीजें जो हम नहीं कर सकते हैं। और फाइनली वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ एआई विद सर्टेन एग्जांपल। आपने बहुत एआई के बारे में नाम सुना होगा, जैसे गूगल असिस्टेंट्स है, गूगल मैप है, आपके फेस रिकॉग्निशन है, लॉकिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिकली सेंसर है। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ एआई, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एआई। लेकिन ये किस कैटेगरी में, किस टाइप को बिलोंग करते हैं? सेल्फ ड्रिवन कार है, तो ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? दैट वी विल सी एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। दैट इज द टाइप एंड यूजेस ऑफ एआई। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट कंसेप्ट। एआई होता क्या है, एआई की मीनिंग क्या है, एआई का कंसेप्ट क्या है। एआई का सिंपल मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, when we have given the brain, when we have insert the intelligence with the help of software into a machine or think to act, behave and giving the response like a human being, it is called as artificial intelligence। मतलब ये हुआ कि जब किसी मशीन में, जब किसी रोबोट में, जब किसी चीज में इंटेलिजेंस डाल दिया जाए और वो एक्ट करे, रिएक्ट करे, रिस्पॉन्स करे और आपको आंसर दे लाइक ए ह्यूमन बीइंग, इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक AI is enabled to imitate like human intelligence and behavior, allowing them to analyze the large amount of data with the help of the input which we can put. तो AI system process information and give the response as per the situation, as per the demand। तो दैट इज द AI। यही है AI का मतलब। अगर हम और इसके बीच में जानने की कोशिश करेंगे तो द गोल इज टू डेवलप मशीन्स दैट कैन परफॉर्म टास्क मोर इफिशिएंटली, एक्यूरेटली एंड ऑटोनोमसली देन ह्यूमन। AI का गोल जो है वो ऐसे मशीन को बनाना है, ऐसी चीजों को बनाना है, ऐसे चीजों में इंटेलिजेंस डाल देना है जो ह्यूमन बीइंग से भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, इफिशिएंटली के साथ और ऑटोमेटिकली परफॉर्म करे। और AI बहुत सारे फील्ड में आज की डेट में यूज हो रहा है। वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द मेडिकल फील्ड, यू आर टॉकिंग अबाउट द इंजीनियरिंग फील्ड, यू आर टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोमोबाइल, यू आर टॉकिंग अबाउट द एंटरटेनमेंट एंड लाइक ऑन, यू आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन। तो हर फील्ड में AI आज की डेट में यूज हो रहा है, मोर और लेस, कहीं पे कुछ कम, कहीं पे बहुत ज्यादा। If we move to the next one, before moving to the next one, let me give you the example of certain AI, जैसे self-driven car, census, chat GPT, chatbot. These all are the example of AI.
अब हमारा जो सेकंड कंसेप्ट है आज का वो है व्हाट आर ओपन एआई एंड चैट जीपीटी। क्या ये दोनों सेम चीजें हैं? क्या ये दोनों में डिफरेंस है? कैसे ये अलग है, कैसे ये सेम है? आज हम इसके बारे में बात करेंगे, सेकंड पार्ट ऑफ द मॉड्यूल नंबर 10। तो चैट जीपीटी पार्ट है ओपन एआई का। ओपन एआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एआई बेस्ड सिस्टम को डेवलप करता है। It was developed in 2015 in USA. Their goal is to make system AI based, artificial intelligence based, for the sake of development of human being, for the sake of development of humanity. उनका ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमैनिटी को और आगे बढ़ाना विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ओपन एआई कुछ भी नहीं है, ये एक इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये एश्योर करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम चीज़ों को और अच्छे से और एडवांस फॉर्म में और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में देख सकें और यूज कर सकें। तो एआई ने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया इन द फील्ड ऑफ, ओपन एआई ने बहुत सारा कुछ कंट्रीब्यूट किया इन द फील्ड ऑफ एआई, जिसका बहुत बड़ा और बहुत बेटर एग्जांपल है जीपीटी, चैट जीपीटी। जीपीटी का फुल फॉर्म है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अभी हम थर्ड वर्जन में है, 3.5 वर्जन में है, नेक्स्ट 4 वर्जन होगा, 5th वर्जन आएगा विद सम एडवांसमेंट इन दैट वन। तो यहाँ पे हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ओपन एआई इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड चैट जीपीटी इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। देन व्हाट एग्जैक्टली चैट जीपीटी इज? चैट, as we all know, they are the interaction between two person, two things, two places। तो इसमें हम चैट करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, और जीपीटी का मतलब होता है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। वो एक ट्रांसफॉर्मर है, वो एक ऐप है, वो एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर डेटा फिट है, फीड है और डेटा का एक्सेस है। आप जिस तरह के भी क्वेश्चन पूछेंगे, इफ इट इज इन दैट रेंज, मिलियन ट्रिलियन ऑफ दे हैव द डेटा इनसाइड दैट वन, उसके बेसिस पे आपको रिस्पॉन्स देगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द चैट जीपीटी। ओपन एआई ने OpenAI has released different version of GPT model with each iteration, हमेशा डेवलपमेंट करते गए, 1 2 3 3.5, जैसा कि मैं भी कह रहा हूँ 4, like that one। Chat GPT is one of the model in GPT series developed by OpenAI। It is a language model that utilize deep learning technique to generate human-like text responses based on input literacy। तो चैट जीपीटी में जैसा कि आप इनपुट डालोगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, इन द फॉर्म ऑफ सजेशन, इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन, वो आपको उस तरह का रिस्पॉन्स देगा। इफ यू वांट टू नो अबाउट द व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज एआई, इट विल गिव यू द डिफरेंट आंसर फॉर दैट वन। इफ यू आस्क दैट गिव मी definition of digital marketing from different sources or from the different scholar, then he will also give you the responses like that, according to XYZ, according to this one, according to this is the definition। तो इस तरह से रिस्पॉन्स, फिर वो रिस्पॉन्स को दोबारा अगर आपने उस इसके अंदर के सवाल पूछे, इट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव इट दैट, बिकॉज इट हैज बीन ट्रेंड ऑन ए मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा फ्रॉम द इंटरनेट टू लर्न पैटर्न को जानने के लिए, ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट एंड इनेबलिंग टू जनरेट द रिलेवेंट रिस्पॉन्स। सो चैट जीपीटी इज लाइक दिस। आपने क्वेश्चन पूछा, इट विल गोइंग टू गिव यू द रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। आपने फिर से क्वेश्चन पूछा और यू वांट टू नो इट मोर इन डिटेल, आस्क द सेम क्वेश्चंस अगेन, इट विल गिव यू द डिफरेंट रिस्पॉन्स। देन व्हाट इज द यूज ऑफ ओपन एआई चैट जीपीटी? चैट जीपीटी का बेसिकली यूज क्या है? नॉर्मली देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेस आर देयर, बट सम ऑफ द कॉमन यूज इज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज रिट्राइव। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए किसी चीज के बारे में, इट इज गोइंग टू गिव यू द इंफॉर्मेशन कि ये क्या है, कैसे काम करता है एंड ऑल दैट। यू वांट टू इंक्रीज योर नॉलेज, आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, आप उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं, सो कि दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस नॉलेज फॉर योर बेटरमेंट, तो उसको भी आप टेक्स्ट के फॉर्म में पा सकते हैं थ्रू चैट जीपीटी। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। देन क्रिएटिव राइटिंग एंड कंटेंट जनरेशन, it is helping you to write in the creative form, like you want to write an application, you write a blog, you want to write a report, you want to write a thesis, suggestion, recommendation. So it is helping you to write the things based upon the data which you provided। आप जिस तरह का डेटा उसको देंगे, जिस तरह के सिचुएशन आप दोगे, उसके बेसिस पे आपको
चीजें लिख के देगा, चाहे वो एप्लीकेशन के फॉर्म में हो, रिपोर्ट के फॉर्म में हो, मेमो के फॉर्म में हो, फॉर्मल वे में हो, इनफॉर्मल वे में हो, इट इज गोइंग टू राइट एंड गिव यू द यूनिक थिंग्स ऑलवेज. देन पर्सनलाइज असिस्टेंस एंड रिकमेंडेशन. पर्सनलाइज असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन. आपको एजुकेशन की फील्ड में कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से बेहतर कोर्सेज हैं, इसके बारे में बताएं. फिर आपके अपने इंडिविजुअल कैरियर ग्रोथ के बारे में, विच कोर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर मी फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ माई कैरियर ग्रोथ, किस तरह से मैं अपने कंपनी में. सो दिस टाइप ऑफ पर्सनल रिकमेंडेशन ऑल्सो इट इज गिविंग यू बेस्ड अपॉन द डेटा विच यू प्रोवाइडेड. Learning and education, it is going to teach you different languages. It is also going to teach you computer languages like C, C++, Java, like that one. Then language translation and interpretation. It is going to translate the language from one language to another language. It has the capability to translate the large amount of language, जैसे हिंदी से अरबी, अरबी से English, English to different languages. So you write an application in English, then ask him और ask it to translate into हिंदी, हिंदी में कन्वर्ट कर देगा. ask him to translate into अरबी, अरबी में ट्रांसलेट करके दे देगा. so it has the capability for that one. customer support and assistance. customer support में जैसे ये होता है कि how to use these things, how to repair these things, it is going to assist you and give some recommendation for that one, all in the form of text. तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ बहुत तेजी से, जो भी अभी हम लोगों ने देखा है कि इट इज गोइंग टू गिव यू द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू आस्क फ्रॉम द वाइड रेंज ऑफ टॉपिक. इट इज आल्सो एंगेज इन द कन्वर्जन. जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा, कन्वर्सेशन के में एंगेज होता है. आपने क्वेश्चन पूछना, आपने फॉलोअप क्वेश्चन पूछा, इट इज गोइंग टू गिव यू द आंसर. आपने टेक्स्ट को जनरेट कराना है तो इट इज गिविंग द गिवन इनपुट के बेसिस पे देता है. रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है. असिस्टेंस इन लर्निंग, आपको नई नई चीजें सीखने में मदद करता है. इट इज असिस्टेंट इन द ट्रांसलेशन ऑफ द लैंग्वेजेस. Plus it is going to help you to write an invitation for your marriage, invitation for your birthday, invitation for different occasion. It is giving you the personal diet plan. If you want to become fat, if you want to become thin, if you want to have some keto plan for your diet, it is going to give you. फिर उसके बाद अगर आपको किसी बुक की समरी चाहिए, किसी बुक की रिकमेंडेशन चाहिए, it is provide you. आपने किसी बुक का नाम लिखा and ask him to summarize this book into a 1000 word, 500 word, 300 word, it is going to give you the summary. So based upon that summary, you will feel that कि मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए. कंपेयर कर सकते हैं बुक में. So which one is the best suited book? ये भी हो सकता है. Then write a speech. Ask him to write a speech for various purpose for that one. Then generate name for your organization which is more suited as per your product for the kids which is just born. And it will going to teach you the new skills, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो what you call as a new languages ho. Then it is also help you to develop the script for your song, for your story, for your content writing. So these are some common things which it is going to help you and through which we are going to do for that one. अब सवाल ये उठता है कि how to use the ChatGPT को यूज कैसे करूं. सो देयर इज ए प्रोसेस, देयर इज ए स्टेप. फर्स्ट स्टेप तो यही होगा कि यू हैव टू ओपन द वेबसाइट, दैट इज द ओपन एआई के वेबसाइट पे आप खोलिए. वहां पे आपको जाके यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ with your name, with your username and password, and then provide the email and create the password. Then they will going to verify your email के verify होंगे with the help of your mobile phone or with the help of your email ID. फिर वो you have to provide your name and certain detail. Then you will start chatting with that one. Start chatting with your first questions, then follow-up questions, then the next questions, then the separate questions, and like this way you can go it for that one. It will remember your previous question also. आपके पीछे के भी क्वेश्चंस को याद करके वो रखता है अपने पास. So like this way we can use the ChatGPT. And what ChatGPT cannot do, many things still ChatGPT cannot do. बहुत सारी ऐसी चीजें ChatGPT अभी नहीं कर सकता है. It doesn't have the logical sense. It cannot be give you the data after September 2021. It cannot be give you the data real time information. तो इसमें क्या होता है कि पहला तो यही लिमिटेशन है, it doesn't have the common sense. Common sense, if you give some confusing questions, it cannot make it right and give you the right answer. It may give you the wrong answer if you just twist the questions and ask in a different way. तो ये आपसे दूसरे तरह के आंसर देगा. So there is a lack of common sense in ChatGPT. ChatGPT lacks creativity. Yes, अभी हमने बोला था creative करके आपको देता है, but that creativity is coming from the lots of the things which is already available, but not the complete new things.
पूरी तरह से नया चीज वो लेकर नहीं आएगा, जो उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसी में से आपको निकाल के कोई नई चीज देगा, बट इट इज नॉट टोटली नोवल्टी, पूरी तरह से नया नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लैक क्रिएटिविटी। इट कैनॉट एक्सप्रेस इमोशन, अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को, सैड चीजों को, रोने वाली चीजों को क्राई के फॉर्म में, ये सबको एक तरीके से एक्सप्रेस करेगा। when we are expressing the things with our face, which our, so we will give the emotion along with that. That expression is lacking in the chat gpt, तो वो expression नहीं होता। lack of real time information, if you ask that what is the current rate, date and time, it will not give you what is the score at right time, what is the weather, so इस तरह current date and time so lacking है चैट जीपीटी के फॉर्म में। और दूसरे एआई हैं विच इज प्रोवाइडिंग दैट वन, बट दिस चैट जीपीटी हैज द, दे आल्सो हैव द लिमिटेड एक्सेस ऑफ इंटरनेट आफ्टर सितंबर 2021। सो वो कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, लेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे आफ्टर सितंबर 2021 के। एंड देन इनएबिलिटी टू प्रोवाइड द पर्सनल और स्पेसिफिक एडवाइस। कई बार क्या होता है कि दे डोंट, वट एवर द इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग, बेस्ड अपॉन दैट दे विल गिव यू द इंफॉर्मेशन, बट हेल्थ से रिलेटेड some uncommon things they may not be able to provide you, it may not be able to provide। उसी तरह से लीगल एंड एथिकल इश्यूज में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वो दे देता है, which is not allowed, like age below 18, if somebody will say that I am 18 plus and asking the different questions, so it will provide you some ethical issue is also there। तो इस तरह के एथिकल इशू हैं जो कि चैट जीपीटी के लिमिटेशन में आता है। देन टाइप्स एंड यूजेस ऑफ एआई। आपने बहुत सारे एग्जांपल सुने होंगे एआई के, बट वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। लाइक फर्स्ट टाइप इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। इसका यूज है अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग ह्यूमन लैंग्वेज। एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग ह्यूमन लैंग्वेज, लाइक फॉर एग्जाम्पल गूगल असिस्टेंट्स, कस्टमर सर्विस चैटबॉट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम लाइक गूगल ट्रांसलेट। तो ये सारे एग्जांपल हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टाइप के। दूसरा टाइप है कंप्यूटर विजन, इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेज और वीडियो, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम, फेशियल रिकॉग्निशन, ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्निक, मेडिकल इमेजिंग। Then third one is recommendation system. It will provide you the recommendation based upon your past experience, based upon your follow-up experience. Like जैसे Netflix पे आपको recommendation मिलता है, this type of series you will watch. जैसे आपको Amazon का product recommendation मिलता है because people like you purchase these things also. Like Spotify पे आपको मिलता है कि इस तरह के गाने आप की playlist बना सकते हैं. So this is comes under the recommendation system. Then next type is speech recognition. आपके लैंग्वेज की बात से वो समझ जाता है कि व्हाट यू वांट टू से। बेसिकली इट इज वेरी गुड फॉर द पीपल हु डजंट नो हाउ टू राइट, और लिटरेट, इलिटरेट पीपल और ब्लाइंड पीपल। तो कन्वर्टिंग स्पोकन लैंग्वेज इनटू द रिटन टेक्स्ट, जैसे कि एप्पल की सीरी है, अमेजन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन। देन नेक्स्ट वन इज द मशीन लर्निंग, ट्रेनिंग एल्गोरिदम टू लर्न पैटर्न एंड मेक प्रिडिक्शन, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम है, स्पैम फिल्टर है, क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल है, मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम है। सो मशीन लैंग्वेज में ये सारी चीजें आती हैं। देन वर्चुअल असिस्टेंट्स, इट विल गिव यू द वर्चुअल असिस्टेंट्स थ्रू वॉइस और टेक्स्ट, जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन में था। सेम वे एप्पल सीरी, अमेजन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट्स एंड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्टेना इसका एग्जाम्पल है। देन डीप लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर ये आता है कि प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स डेटा, रिप्रेजेंटेशन एंड मेकिंग एक्यूरेट प्रिडिक्शन, लाइक इमेज का रिकॉग्निशन कर लेना, इमेज का रिकॉग्निशन कर लेना। इन केस ऑफ गूगल फोटो के एग्जांपल आप दे सकते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम होगा, ऑटोनोमस ड्राइविंग एल्गोरिथम होगा। देन ऑटोनोमस सिस्टम ऑपरेटिंग एंड मेकिंग डिसीजन विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, जैसा कि सेल्फ ड्रिवन कार है, ड्रोन है, ऑटोमेटिक रोबोट है, एंड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिक रिपीटेड टास्क एंड प्रोसेसिंग लाइक सॉफ्टवेयर रोबोट, invoice processing. Like this way, we understand that types and uses of AI. So I hope you understand these things. And like this way, we come to the end of this point.